Why enzyme histochemistry is important? What is it? What is enzyme histochemistry? तो जनरली आपको इसका सिर्फ प्रिंसिपल जानना है, ओके, और कुछ एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स मतलब उनके स्टेनिंग टेक्निक्स के एग्जांपल, ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that catalyze the reactions, and these enzymes are specifically localized in certain organelles, and depending upon their function in that particular organelle, for example, like catalase is present in, कहाँ होता है बताइए, पर हिंट दे रहा हूं, पर ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है कैटलेज एंजाइम, पढ़े थे हम लोग क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास, भूल गए स्टूडेंट्स? यस सर। पर ऑक्सीसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज लोकलाइज्ड, इवन इन प्लांट आल्सो इट हैज इन क्लोरोप्लास्ट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये तो बता सकते हो आप? सेकंड कॉम्प्लेक्स। हाँ, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहाँ पर है? यस साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया। वो तो कॉम्प्लेक्स तो जो है सो वो ये खुद ही है, ये कहाँ पर है? सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है। इनर मेम्ब्रेन है, ये तो मैट्रिक्स हो गया, ओके। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर ये एंजाइम लोकेटेड है, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल का भी पार्ट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स सेल के अलग अलग लोकेशन पर, ऑर्गेनेल्स में, दे आर लोकलाइज्ड, and due to many pathological conditions, differences in their activity is reported. Under these pathological conditions, differences in the activity of enzymes and their distribution also inside the cell gets changed. So one needs to demonstrate it, to know it, to visualize it, okay, the location of these enzymes, okay. So this technique is a link between biochemistry, histology, molecular pathology, and it helps in the study of many kinds of studies like intoxication studies, even in the diagnostics, medical diagnostics, where the changes in the organism's pathological conditions over the period of time is involved. So at this point of time, pathologist will analyze the section of that particular tissue. After some time, he will again analyze it, and he will observe the changes, whether that is worsening or that is going towards the cure. तो हिस्टोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स का भी करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशन से एसोसिएटेड हैं, उनके एक्सप्रेशन में अंतर,
उनके लोकेशन में अंतर, उनकी एक्टिविटी में, उनकी मात्रा में इस तरह से अंतर, तो हम हिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा इन एंजाइम्स को स्टेन करके स्पेसिफिकली विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, और उसके क्या चेंजेस आए उसको हम नोटिस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ द एंजाइम। ओके, और थोड़ा बहुत उसका एक्टिविटी ऑल्सो यू कैन एनालाइज बाय हिस्टोकेमिस्ट्री। तो इन हिस्टोकेमिस्ट्री एंजाइम काइनेटिक्स का स्टडी नहीं कर सकते। एंजाइम काइनेटिक्स का स्टडी करने के लिए इसका ऐसे करना होगा, बायोकेमिकल ऐसे, बट you can visualize the enzyme by using histochemistry. So there are several methods. For example, there are many examples. I will come to that one by one, but before that, I want to discuss the principle first. This is in brief about the enzyme histochemistry. Now I'll come to the principle. Students, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. This is the principle. It says, enzyme histochemistry is a morphological technique. Means you are visualizing. Okay. कभी कभी गलती से मेरा वीडियो ऑन हो जाता है, अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत पता होगा। लास्ट मीटिंग में हो गया था, आई डिडंट नो। सो प्रिंसिपल जो है इसका यही है कि एक मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक है जो कि दैट सर्व्स अस टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन टिश्यूज। This is about this technique. And the visualization is based upon the action of the enzyme on a specific substrate. This you know already. क्या लिखोगे? This is a morphological technique that serves to demonstrate morphological technique that serves to demonstrate the activity of enzymes present in tissues. Second में लिखोगे, the visualization is based on the action of the enzyme on a specific substrate. हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और उस स्पेसिफिक स्पेशल सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो इफ दैट एंजाइम आपके जो इंटरेस्ट का है जिसको आप खोज रहे हो, इफ दैट इज प्रेजेंट, दैट सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज गिविंग सम कलर और प्रेसिपिटेट, you can visually analyze, you can see it if it is giving color or precipitate. So following this enzymatic reaction, after that an insoluble product develops, providing the location of the enzyme. That is morphological technique. And visualization is second point में लिखोगे, visualization is based on the action of the enzyme. Is based on the action of the enzyme. Inactive enzymes cannot be visualized by enzyme biochemistry. Denatured enzymes, you cannot visualize it. So how will you localize denatured or inactive enzymes then? You will do immunohistochemistry then, where you will use a fluorochrome tagged antibody against the either monoclonal antibody and sometimes polyclonal भी use कर सकते हैं, but सीधा लिखोगे anti fluorochrome tagged antibody. We will direct that antibody to the tissue sample, and the inactive enzyme or denatured enzyme, if that is present there, it will bind, antibody will bind to the epitope.
एंजाइम एक्टिविटी नहीं कर रहा है इनएक्टिव और डिजेक्शन, तो हम उसको एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री से नहीं पता लगा पाएंगे। लेकिन एंजाइम है, उसका बॉडी है, ओके, बॉडी के ऊपर उसका इपिटोप्स है एंजाइम का, उस इपिटोप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी वहां जाके बाइंड कर जाएगा एंड वी विल, हम उसको सक्सेसफुली वी कैन सी दैट, विजुलाइज इट। एंजाइम को देख नहीं सकते हैं, एंजाइम तो बायोमोलिक्यूल, लेकिन इसके प्रोडक्ट जब जनरेट होंगे, एंजाइम बहुत फास्ट रेट से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो दैट प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट होकर के you can visualize that product. So the location of product is the same location where the enzyme is present. जहाँ पर एंजाइम हो वहीं तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट एंजाइम का कोई हाथ पैर तो है नहीं कि प्रोडक्ट बनाया उठा उठा के दूर फेंक रहा है। ओके, जहाँ एंजाइम है वहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, उसके अगल बगल। आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, ma'am. सो आफ्टर दिस एक्शन उसका नॉर्मल जो रिएक्शन है, एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल product develops. And this insoluble product gives you the information about the location of enzyme. If the product is not stained, suppose if you are not, if your product, that product is getting release, वो जरूरी नहीं कि ये product जो है colorful ही हो। If the product is colorless, a metal precipitation technique, or you can couple this enzymatic reaction with an azoic dye, and tetrazoleum salt can be performed. बताएंगे अभी आपको ये azoic dye और tetrazoleum salt। लिखोगे एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, तो सेकेंड पॉइंट क्या था? पहले सेकेंड, फर्स्ट इज क्लियर, लिख लोगे। सेकेंड इज the visualization is based on the action of the enzyme on a specific substrate. Visualization is based on the action of enzyme on a specific substrate. Third point लिखोगे, following this reaction an insoluble product develops providing the location of the enzyme. Providing the location of the enzyme. तो अब आपका और दिस एंजाइम का लोकेशन, मतलब कलरफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइम का प्रोडक्ट कलरफुल नहीं है, कलरलेस है, देन यू कैन, इफ प्रोडक्ट इज नॉट स्टैंड, फोर्थ पॉइंट में लिखोगे इज नॉट स्टैंड ए मेटल प्रेसिपिटेशन टेक्निक और coupling with azoic and no azoic डाई है और टेट्राजोलियम सॉल्ट, दोनों डाई नहीं है, दोनों सॉल्ट, एक डाई है उसमें एक सॉल्ट, तो ये अच्छा रहेगा विथ एजोइक डाई एंड टेट्राजोलियम सॉल्ट।
पॉइंट में लिखोगे, हो गया ये चौथा। प्रिंसिपल में ही लगा दोगे पांचवा पॉइंट आप कि मेथड्स टू स्टडी द एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ एंजाइम। मेथड्स, जिस क्लास का एंजाइम है सबका मेथड अलग अलग होगा हिस्टोकेमिस्ट्री का। मेथड्स टू स्टडी पढ़ाए थे 6 क्लास, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, ये सब मेथड्स टू स्टडी। आ रहा है स्टूडेंट आवाज मेरा? Yes, sir. Methods to study the enzyme histochemistry depend upon class of enzyme। ठीक है, ये हो गया आपके इसके प्रिंसिपल एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री का, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोकेमिस्ट्री, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल। अब देखिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम इसको कवर कर लेते हैं। See, now you know that the visualization is based on the action of the enzyme on a specific substrate. This you know. Enzyme histochemistry combines the biochemical analysis of enzyme activity with information on its topographical location। मतलब कि एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री में दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइंड है, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी भी and the information of its location। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल we will see in a dehydrogenase reaction any enzyme, डिहाइड्रोजिनेजेस बहुत तरह के हैं, हाइड्रोजिनेज इसमें किसी भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हम डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले अगर वो एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज क्लास से बिलोंग कर रहा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है सोडियम सक्सिनेट। और या सोडियम एल लैक्टेट। ये दोनों तरह के सबस्ट्रेट ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं by this enzyme, okay, and the stoichiometric color indicator tetranitro-tetrazolium chloride blue is reduced to black or blue for magenta। इस स्टेनिंग सॉल्यूशन में this compound is present। stoichiometric color indicator means जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसी अनुपात में कलर भी डेवलप होगा, और जितना सबस्ट्रेट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्रिक बैलेंस। तो स्टोकियोमेट्रिक कलर इंडिकेटर आपका ये दोनों जो है एंजाइम अगर है
तो इस सबस्ट्रेट को वो ऑक्सीडाइज कर देगा. सो दिस सबस्ट्रेट विल बी प्रेजेंट इन द staining solution. Okay, and now the enzyme is located in the tissue or the cell. You are applying the staining solution containing these two substrates. If the enzyme is present, these two substrates or any one of these will be there, will be oxidized, and a color indicator will be oxidized, and a color indicator जो आपका ब्लैक और ब्लू है उसका नाम है हो रहा है, एंड दैट कलर इंडिकेटर कलर इंडिकेटर जो है वो प्रोड्यूस बाद में हो रहा है. कलर इंडिकेटर भी स्टेनिंग सॉल्यूशन में है. तो स्टेनिंग सॉल्यूशन में दिस आल्सो इज देयर, ENBT. ये हो गया आपका नाइट्रो टेट्राजोलियम क्लोराइड ब्लू. नाइट्रो टेट्राजोलियम क्लोराइड. Why this B is there, I don't know. नाइट्रो टेट्राजोलियम क्लोराइड ब्लू इसका नाम है. ये है टेट्राजोलियम, टेट्राजोलियम नहीं, नाइट्रोजोलियम. नाइट्रोजोलियम क्लोराइड ब्लू. This is present in the reagent. लेकिन चूंकि एंजाइम नहीं है तो इन ये सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड ही होंगे. This color indicator टेट्राजोलियम. Now this will be oxidized, substrate will be oxidized, or this coloring reagent, this dye present in the staining solution, this will be reduced to black or blue formajan. FORMAZAN, and this formajan will leave a precipitate. It is precipitate. Now you will see this formajan, so you will localize it. क्या हुआ फिर से समझिए. In the reaction mixture, these substances are present. Sodium succinate, either sodium succinate या sodium L-lactate. ठीक है, आसानी के लिए रख लो, इसको निकाल लो, दोनों सबस्ट्रेट है. आप लिख लो इन द रिएक्शन मिक्सचर सोडियम सक्सिनेट इज देयर एंड ENBT टेट्रानाइट्रोजोलियम क्लोराइड ब्लू इज प्रेजेंट. लेकिन ये एक दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, रिड्यूस नहीं कर सकता है जब तक कि ये एंजाइम नामक मौजूद हो. अगर ये एंजाइम मौजूद है तो सोडियम सक्सिनेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है बाय दिस एंजाइम, और उसके बदले में ये सब्सटेंस ENBT वो रिड्यूस हो जा रहा है into black and blue formajan. And now you are seeing this, detecting it. You are just visualizing this. समझ में आया ये रिएक्शन? डिहाइड्रोजनेज को कैसे लोकलाइज करते हैं दिस एंजाइम. दिस इज द टेक्निक
क्या हम लोग सीख रहे हैं? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स। हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. सर TNBT का यही फुल फॉर्म है। चेक करना तो एक बार गूगल में, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ, वहां पर तो टेट्रा नाइट्रो टेट्राजोलियम ही लिखा है। बी स्टैंड्स फॉर क्या? TNBT। TNBT ठीक है, नहीं सर्च करके बताना मुझे, टाइम जाएगा। याद कर रख लो, TNBT रख लो। Yes, sir. Tetra and butyl titanate. क्या है? टेट्रा Tetra and butyl titanate. टेट्रा एन ब्यूटाइल Yes, sir. और टी से, लास्ट वाला टी से Titanate. टाइटिनेट। Titanate. यहाँ जो मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ उसमें है टेट्रा नाइट्रो टेट्राजोलियम क्लोराइड ब्लू, उसको लिखा है TNBT ब्रैकेट में। तो सबको लग रहा था ये कुछ गड़बड़ है। एनीवे यू इग्नोर दिस, क्लियर कर दूंगा आगे चल के आपको। और इसका भी सर्च करना, ठीक है? सर्च अबाउट दिस वन, टेट्रा नाइट्रोजोलियम क्लोराइड। Okay, sir. सो देखिए, ये रिएक्शन को समझिए, फिर से बता देता हूँ। यह एंजाइम जो है इन दोनों तरह के सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को हम डिटेक्ट कर लेंगे। इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया, सोडियम सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज कर दिया, उसका कुछ नाम होगा। TNBT को रिड्यूस कर दिया, उसको दिया नाम ब्लैक एंड ब्लू फॉर्माजान। एंड दिस यू आर सीइंग है। तो आइए इसको देख लेना, TNBT। आगे चले। हेलो, Yes, sir. सेकेंड जो है, कुछ एंजाइम जो है रिएक्शंस, those enzymatic reactions which can use diazonium salts instead of tetrazonium salt. लेवल एग्जांपल, टेट्राजोलियम क्लोराइड का था एज कलर इंडिकेटर, but this one is different. Some of the enzyme uses this, can use, okay, ये कोई उसका नेचुरल सबस्ट्रेट नहीं है, diazonium salts. Enzyme stand with this kind of reaction are mainly esterases and phosphatases. Esterases and phosphatases. ईस्टर ग्रुप जो है
या फॉस्फेट ग्रुप, इसका एस्टर ग्रुप, इसका फॉस्फेट ग्रुप। ओके, कैन बी स्प्लिट। नो, ये तो एंजाइम है ना, इसका फॉस्फेट ग्रुप का। और इसमें दैट reaction mixture, the substrate is a naphthyl salt. Okay. And another compound is आपका डायएजो सॉल्ट, यानी ये डायजोनियम सॉल्ट। ये अगर एंजाइम है, अगर इस तरह के सॉल्यूशन को अप्लाई किया गया इन दैट मेथाइल सॉल्ट और डायजो सॉल्ट, हेलो, Yes, sir. आप लोगों ने नहीं बोला ना पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग बंद थी या चालू थी? ऑन थी सर। कौन था सर? हाँ सर, ऑन था। नहीं, पाउज्ड था। ऑन लग रहा होगा लेकिन पाउज था, पता नहीं कुछ सिस्टम में